Assalamu alaikum. Welcome to Bacon Begum. This is a recording of a Zoom session we recently did about GRE, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए हैं. So good luck and enjoy watching. GRE होता क्या है, रजिस्टर कैसे करना है, GRE का डिस्काउंट कैसे मिल सकता है. There's a way to take GRE for free as well. We'll be sharing that with you as well. इसके अलावा we'll talk about GRE study material कि GRE के क्या कुछ स्टडी मटेरियल है, पेड क्या है, फ्री क्या है. अमूमन लोग I'm assuming आप लोगों को पता ही है GRE क्या है, which is why you are in this session. But those of you who are probably not as familiar with GRE or who are new to GRE, उनके लिए ये GRE एक एप्टीट्यूड टेस्टिंग एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी मास्टर्स और PhD के लिए रिक्वायर्ड होता है. सब यूनिवर्सिटीज डिमांड नहीं करती GRE. दिस इज मोस्टली अ नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी थिंग और इसमें भी US यूनिवर्सिटीज को जरा ज्यादा US यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं कि GRE हो. Now why I'm saying prefer and not like it's mandatory because कोविड के टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी और कुछ ने अभी भी इसको ऑप्शनल किया हुआ है. But GRE is mostly for like US and Canadian universities. Canadian universities maybe it's like a good to have, not mandatory for universities. But this is think of it like an entrance exam. Right? जिस तरह HEC का वो हैट है HAT हायर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको एक काइंड ऑफ एक स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम समझ लें, जिसके रिजल्ट्स आप जो है ना मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आप यूज कर सकते हो. Yes. So GRE, so I wouldn't try to like sugarcoat it by saying कि नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. मुझे तो लगता था मुश्किल. ठीक है, मैंने 2 दफा दिया था GRE और मुझे दोनों टाइम इसमें एफर्ट लगानी पड़ी थी. I had to put in like study hours in it to prepare for it. Generally 3 महीने कम से कम लग जाते हैं, स्पेशली अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं. मुझे 3 महीने लगे थे, तो मुझे लगभग 2 से 3 महीने लगे थे. बट सो 3 महीने मिनिमम. इससे ज्यादा भी डिपेंडिंग आपका क्या स्केड्यूल है, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं. कुछ लोग 6 महीने पहले भी स्टार्ट करते हैं, which I personally don't recommend because 6 महीने में तो like it's a very long time in between to prepare. But 3 months is what usually most people recommend to set aside to prepare for GRE. Alright, so GRE जो है वो तकरीबन 3 घंटे 45 मिनट का होता है. इसमें 6 सेक्शंस होते हैं. What do they test? They test your verbal skills and your quant skills. Verbal skills यानी इंग्लिश और quant skills यानी मैथ. ठीक है, मेजरली ये 2 सेक्शन होते हैं. इसके अलावा एसे राइटिंग का भी एक सेक्शन होता है. एसे राइटिंग का सेक्शन होता है, आपको 2 essays लिखने होते हैं. बट you can like look up those details on ETS websites. In fact, that is the most legit website to check those details. आपको GRE के हवाले से यानी इसकी कॉस्ट क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, योर बेस्ट रिसोर्स इज द ETS वेबसाइट. बिकॉज ETS इज व्हाट कंडक्ट्स लाइक ETS का ही GRE प्रोडक्ट है. सो उनकी वेबसाइट से सबसे ज़्यादा आपको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिल सकती है. राइट, बट जनरली ये चीज़ें इस पर टेस्ट होती हैं. मैथ, इंग्लिश और आपका एसे राइटिंग सेक्शन होता है. और मैथ का जैसे मैंने बताया क्वांट और इंग्लिश को वर्बल कहते हैं. स्कोर का जो रेंज होता है दैट फॉर ईच सेक्शन लाइक for math and English. इसके बाद मैं इसको quant और verbal बोलूंगी. Quant और verbal के लिए range होती है 130 to 170. So technically you can't score a 0 on GRE. Like ऐसा नहीं होता कि आप बोलेंगे मेरे सारे सवाल गलत हो गए, मेरा 0 आ गया. That's just not possible because minimum range is 130. Range ये है कि minimum 130 और maximum 170. और जो अच्छा स्कोर है ना वो लगभग 150 के बाद का स्कोर अच्छा ही है. Right? Like 150 is what around average. On average people score around 150. Yeah. So 150 के बाद का अगर आपका 155 आ रहा है, 152 आ रहा है, आप अच्छा स्कोर है ये. ठीक है. Yeah, and for those of you who are interested in applying for Fulbright, keep in mind कि इस मर्तबा Fulbright ने 145 in each section का minimum criteria लगाया होगा. Yeah. For you to be eligible for the program, आपको 145 हर एक दोनों sections में लेने होंगे. Quant में भी 145 हो और verbal में भी 145 हो. Yeah. Next. What happened? Your presentation stopped? Okay. Yeah. Right. All right. So now this is an important slide. A lot of people are interested in this because GRE, thanks to dollar price, बहुत महंगा हो गया है. जब हम दे रहे थे उस टाइम पे 30,000 का होता था, 35,000 का होता था और वो भी हमें बहुत बड़े पैसे लगते थे. हाँ, तब भी $200 to $20 का ही था. डॉलर प्राइस कम थी तो वो GRE की प्राइस नहीं बढ़ी है, लेकिन डॉलर प्राइस की वजह से वो बहुत महंगा हो गया है. तो इसलिए बहुत सारे लोगों की ये परेशानी भी है कि अब इतना महंगा हो गया, इसके ऊपर कैसे हम 60,000 पे लगा दें. सो देयर इज अ वर्क अराउंड इट. या व्हाई डोंट यू टेल देम टू वर्क अराउंड. या लाइक अभी जो है 2 चीजें हैं. ठीक है, हमने बताया भी था कि यू कैन टेक द GRE फॉर फ्री. अब एग्जैक्टली वो फ्री किस तरह है, वो ये है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर टीचिंग एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो USCFP ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर दोज एप्लीकेंट्स
जो GRE दे और उसमें स्कोर जो है 145 in each section for those people who are applying for humanities programs, and 150 in each section for those people who are applying for engineering or science related programs. अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, आपने सबमिट किया, आपने GRE का ये स्कोर अगर आपने अचीव किया है, तो फॉर अप टू 30 एप्लीकेंट्स USCFP GRE का कॉस्ट जो है रीइंबर्स कर रहा है. सो दैट्स लाइक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल, स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो figure it out अभी किस तरीके से जो है maybe like take a loan from someone and get done with your GRE, and if you achieve the right score आपको जो है ना वो cost reimburse होगी. So it's a little bit of a risk, like थोड़ा सा वो है कि यार what if now, but why not, like take that Yeah. risk for yourself. अभी के लिए somehow manage to pay this amount, get a good score, and then try and submit your application as soon as possible. Yeah. So there's a good chance के 30 लोगों का वो reimburse करेंगे, so the number is not like एक सब किसी का हो जाएगा, लेकिन try to be among those 30 people जिनको वो reimburse करेंगे. So that's one way in which you can sort of take GRE for free. Requirements slide पे आपको नजर आ रही होंगी that you have to be either teaching or studying at a AGC recognized public university. But दूसरी चीज जो सब लोगों के लिए अवेलेबल है, that option of a discount of $50, वो ये है कि आप अगर 31st जनवरी से पहले, which I think is tomorrow, अगर 31st जनवरी से पहले रजिस्टर करते हो and you use the promo code of New Year 50, तो आपको $50 का डिस्काउंट मिलेगा on the GRE cost. ये ETS की तरफ से. And that's like significant discount in sense कि वैसे GRE जो अभी current price पे है तो वो 59,000 तकरीबन 60,000 का है, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं, सिर्फ कोड यूज करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये कोड यूज करते हैं, तो आपको वो GRE पड़ेगा 45,000 का. तो अच्छा खासा फर्क है. लेकिन शर्त ये है कि 31st जनवरी खत्म होने से पहले पहले आपने रजिस्टर करना है GRE के लिए. और इनफैक्ट the reason we even set up this session on such a short notice is because we wanted कि लोगों को इस डिस्काउंट कोड के बारे में पता चले. हमने इसके बारे में स्टोरीज पे डाला है, और बहुत सारी लाइक USCFP ने भी डाला था, बट स्टिल देयर आर पीपल हु डू नॉट नो अबाउट दिस कोड, सो वी थॉट दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस कि आप लोग GRE फ्री में भी ले सकते हैं अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. So there's an opportunity there. And also anyone who uses this code can get a $50 discount. That's almost 15,000 रुपए, right? तकरीबन लगभग 15,000 रुपए का डिस्काउंट है. So that's significant savings for you. And you can put that money आप वो use कर सकते हैं towards getting the resources that you would need for preparing for GRE. Yeah. So moving on to that, because सिर्फ GRE पहले तो इरादा करना है ना कि GRE का इरादा कर ले, क्योंकि GRE का इरादा और नियत बांधना ना वो ही एक बहुत बड़ी चीज है, राइट? कि आपने सोचते हैं कि नहीं अब करना है, कैसे भी करना है, बिकॉज देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट कि पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए, रजिस्टर करने के लिए और GRE रिसोर्सेज के लिए. GRE की किताबें और मटेरियल दैट इन इटसेल्फ इज आल्सो रिक्वायर्स सम फंड, पर उस पे हम बाद में जाएंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन, अगर एकदम आपने सोच लिया है कि आपने रजिस्टर करना है, देन व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं आपको जो है ना दो तरीके बताऊंगा. इफ यू गो टू दी एग्जामिनेशन सर्विसेज वेबसाइट ऑफ USCFP, एक तो यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है ना, दैट शुड बी योर प्राइमरी सोर्स फॉर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, फुल बैच से भी रिलेटेड भी, और इवन अगर आपको कोई अपडेट्स वगैरह चाहिए उससे हवाले भी. सो इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, उनकी एग्जामिनेशन सर्विसेज में यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर GRE. अब आपको रिक्वायर्ड क्या है GRE के रजिस्ट्रेशन के लिए? यू विल नीड अ क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो फिर आप ETS की वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे उन्होंने ETS का वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो उधर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एंड बहुत सीमलेस सा प्रोसेस है, कोई मसला नहीं होगा. बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड का एक्सेस नहीं है, व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन रीच आउट टू USCFP. उनके एक प्रॉपर प्रोसेस है, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेके आप उनको बैंक ड्राफ्ट बना के उनको दोगे तो दे कैन डू द रजिस्ट्रेशन ऑन योर बिहाफ. तो ये चीज़ आपने देखनी है कि दोनों आपके पास तरीके अवेलेबल है. इफ़ यू वांट द $50 डिस्काउंट तो आपको कल की तारीख में जो है ना ये करना होगा, अदरवाइज यू कैन डू इट लेटर एज वेल. और अगर इरादा कर लिया है ना कि GRE देना है, अगर 50-60% भी दिल है कि देना है, फुल बैट अप्लाई करना है, देन टेक दिस चांस फॉर योरसेल्फ. लाइक क्योंकि देखिए अभी ये लग रहा है 60,000 की इन्वेस्टमेंट है, 70,000 की इन्वेस्टमेंट है, पर जो रिटर्न मिलेगा ना इस पे, दैट इज, I mean, you can't even put it into numbers कि वो कितने का रिटर्न है. एक तो डिग्री आपकी 2.5-3 करोड़ की आपकी डिग्री फंड हो जाती है, आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है. इसके अलावा यू गेट टू ट्रैवल सो मच एंड देयर इज नो वे यू कैन पुट अ नंबर टू इट. जहाँ सो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो अभी शॉर्ट टर्म में करनी पड़ी है, बट इसका रिटर्न आपको बहुत लॉन्ग टर्म में मिलता है. लाइक ड्यूरिंग योर फुल बैट प्रोग्राम, लाइक आपको
अपने लिए लैपटॉप लेने के लिए पैसे मिलते हैं, लाइक यू इवन गेट बुक अलाउंस, आपको कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो है ना आपको आपको फंड्स मिलते विंटर हैं। गियर का अलाउंस भी मिलता है Yeah. कि यू गेट लाइक इट्स सेपरेट अ वेरी मनी। कम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप। लाइक हमें अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है ना इस पे अप्लाई नहीं करते। अप्लाई नहीं करते। लाइक लास्ट ईयर 1200 लोगों ने अप्लाई किया था फॉर फुल ब्राइट, जिसमें और मतलब 150 स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप देख लें कितने अच्छे चांसेस है अगर कोई अप्लाई करता है और सही से अप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी किसी भी तरह से आप एप्लीकेशन भेज दें, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेना तो बहुत अच्छे चांसेस है। द रियली रियली गुड फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड। So going back to GRE registration, this is the website जहाँ पे आप जो है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यू कैन रजिस्टर डायरेक्टली ETS की, और ये वो है वेबसाइट है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है एंड क्रेडिट कार्ड का एक्सेस नहीं है तो देन यू कैन लाइक रीच आउट टू USCFP फॉर द रजिस्ट्रेशन एज वेल। उन्होंने ईमेल आईडी भी दी हुई है तीनों सेंटर्स के, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, और फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। लाइक बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम, गेट द डिटेल्स। आपको जो है ना बैंक ड्राफ्ट बनाने से पहले उनसे डॉलर रेट कंफर्म करना होता है, तो जिस दिन वो आपको डॉलर रेट कंफर्म करें उसी का अकॉर्डिंगली आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक रजिस्टर फॉर GRE। और एक बहुत साइड की बात है, लेकिन तो बहुत सारे में मैसेज आते हैं कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं नहीं अप्लाई कर सकता या कर सकती, या फिर मेरे पास तो ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इट्स अ माइंडसेट। when you start looking at why you can't do things or why they can't happen, you do end up finding reasons. Honestly, the मुश्किल नहीं होता कि why you shouldn't or can't or won't be able to do things. But if you flip that mindset and start thinking, how can I make this happen? कैसे हो सकता है? There has to be a workaround. लोग कर रहे हैं ना, दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। अगर दुनिया भर में लोग कर सकते हैं तो आई एम श्योर मैं भी कर सकती हूँ। when you go forward in things with that mindset, चीजें निकल आती हैं, वसाइल भी निकल आते हैं, सही वजह भी निकल आती है, like that willingness, that motivation. So that is what we like urge you guys to have, that sort of mindset. खुद ही सारे जो है ना मसलों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे. So that is work around. क्रेडिट कार्ड है तो आप ETS से कर लें, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो call USCFP and they'll help you in this. Moving forward. All right, now the big one, right? GRE study material. अब आप इस स्टेप पे हैं कि आपने इरादा कर लिया कि आपने GRE देना है, आपको समझ आ गया टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, और आपने रजिस्टर भी कर लिया है. गुड जॉब, यू आर लाइक 50-60% इनटू दिस जर्नी. काम हो चुका है. अगला चीज है प्रिपेयर करना, बिकॉज नाउ द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल फॉर यू इज टू थिंक कि आपने मिनिमम 140 लेकर आने अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन ऑब्वियसली मैक्सिमम की कोई हद तो नहीं है, लेकिन जितना अच्छा आप स्कोर ला सके. अब यहाँ पे मैं एक बात और कहती चलूँ कि ये जहन में रखें कि फुल स्कोर लाना है. बहुत से अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं फुल आने चाहिए, पूरे पूरे मार्क्स आने. GRE इज नॉट द सॉर्ट ऑफ टेस्ट जिसके अंदर पूरे मार्क्स आना, मतलब क्या बोले कि जब तक मेरे 170 आउट ऑफ 170 नहीं आए हर सेक्शन में तो मैं तो कामयाबी हासिल नहीं हुई इसमें. One more thing, before like we continue with the session, मुझे नहीं पता कि किस तरह एनोटेट करने को जो है ना डिसेबल करते हैं, सो जो लोग हमारे स्क्रीन पे एनोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट so that we can continue with the session peacefully. ठीक है? All right, I wanted to point that out. Now we can continue. आपके नाम नजर आ रहे हैं जो एनोटेट कर रहे हैं, so don't do that. Okay. All right. All right, we can move forward. Okay. मैं क्या बता रही थी? I was telling मेरी ट्रेन ऑफ थॉट Sorry, derail हो गई है. so you're talking about resources for it. Yes. आप कहाँ से उनको इकट्ठा कर सकते हो, कौन से अवेलेबल हैं? अब थॉट गई, अब अब मैं नई थॉट पे आ रही हूँ. ठीक है. अच्छा, all right. So GRE study material. Yes, याद आ गया. I was saying, sorry guys, मेरे ध्यान से निकल गया था, but I was saying कि ये समझ में आ रहा है कि 170 out of 170 लेने हर सेक्शन में. अच्छी स्कोर की कोशिश करें कि यार 145 से तो डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए. 150, 160 जो भी आपका स्कोर आएगा कोशिश करें कि अच्छा आए, लेकिन परेशान ना हो अगर फुल नहीं आ रहा तो. ठीक है, तो ये बात. दूसरी बात है कि GRE स्टडी मटेरियल, इस पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. Obviously a lot of companies are giving out very very good resources. Like अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं. अक्सर GRE टेस्ट प्रेप कंपनीज का क्या होता है कि विद इन लाइक उन्हीं के GRE मटेरियल या पैकेज में कुछ रिसोर्सेज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए होते हैं कि यार हमारी वेबसाइट पे आए, वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आए और जाके ये फ्री रिसोर्सेज ले लें. और फिर उसमें से कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक, जिसको उन्होंने पेड प्राइस टैग लगाया होता है कि यार ये हमारा स्टडी प्लान है या हमारा टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है. सो यू विल हैव टू सी कि क्या कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप फ्री में मिल सकते हैं और कौन से हैं जो कि पेड हैं. इज आवर स्लाइड स्टिल विजिबल? मैं अभी कर देता हूँ. हाँ, because I want to show specific. Okay.
Right. So GI study material में ना I categorize them in two different sections. एक तो वो free resources हैं जिससे कि अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट कर लें. एक तो ETS की ऑफिशियल ETS की वेबसाइट पे जाएं तो ETS ऑफिशियल के प्रैक्टिस टेस्ट है. उन्होंने 3 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं जो कि फ्री हैं. आप में से जो लोग इस नियत के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने GRE देना है, तो देयर फर्स्ट लाइक स्टेप, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट, जो कि आप आराम से ये ETS के प्रैक्टिस टेस्ट से दे सकते हैं. आप इसके अलावा भी अगर गूगल करें ना कि फ्री GRE टेस्ट वगैरह, आपको टाइम टेस्ट मिल जाएंगे आराम से. यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आपको दूसरे वेबसाइट्स पे भी वेबसाइट पे मिल मिल जाएंगे. जाएंगे. इसके अलावा फ्री रिसोर्सेज में मगूश की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी वीडियोस हैं. आई थिंक मैंने जो भी स्कोर लिया था वो मैंने मगूश की उस टाइम पे मगूश वाज व्हाट आई थॉट वाज ब्रिलियंट. Yeah. और कंपैरेटिवली उस टाइम पे सस्ता भी था क्योंकि बैक इन 2015 जो दो रिसोर्सेज जिसके बारे में हम सब बात करते थे वो दैट वाज मैनहट्टन प्रेप एंड मगूश. मैनहट्टन प्रेप वाज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक इट्स $449. अब तो बहुत ही बहुत महंगा है. मगूश वाज $149 का था उस टाइम पे भी. लेकिन मगूश की अच्छी बात है कि मगूश ने अपनी सारी जो वीडियोस है ना, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी वीडियोस उन्होंने यूट्यूब Yeah. चैनल पे डाली हैं. सो दैट वाज रियली हेल्पफुल. सब्सक्रिप्शन लेने के तो पैसे थे नहीं मेरे पास, तो मैंने कभी भी ना मैनहट्टन पेप लिया ना मगूश लिया, लेकिन आई यूज देयर वोकैबुलरी वाली ऐप मैंने उनकी यूज की थी और उनकी जो वीडियोस हैं because they talk about question solving techniques on their in their videos, so do check it out. Manhattan Prep की भी YouTube पे videos हैं, बट मैंने कभी उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया. बट आई एम श्योर दैट्स आल्सो अनदर फ्री रिसोर्स, सो doesn't hurt to check it out, right? Then there is another वो technically GRE GMAT है, बट ग्रेग मैट के को भी काफी लोग बोलते हैं उसको. उसमें भी उनका फ्री वोकैबुलरी लिस्ट है. गो टू देयर वेबसाइट. उसमें उन्होंने एक जगह पे दिया हुआ है कि स्टडी प्लान है, राइट. सो टू एक्सेस देयर स्टडी प्लान यू विल हैव टू रजिस्टर एंड ऑल. आप जब पहला होगा ना बिफोर यू स्टार्ट डू दिस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको उन्होंने लिस्ट बताई होगी कि ये रिसोर्सेज आपको चाहिए, राइट. ETS की बुक चाहिए या मैनहट्टन प्रेप की क्वांट की बुक चाहिए, व्हाटएवर. उसके अंदर नीचे एक वोकैबुलरी लिस्ट भी दी हुई है. नाउ दैट वोकैबुलरी लिस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको डाउनलोड कर लें. जब आप आगे उसमें जाएंगे स्टडी प्लान पे तो वो बोलेंगे कि जी पे करें आप $6 या $5 पर महीना है समथिंग. बट जो भी रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल है ना इन वेबसाइट्स पे, वो तो डेफिनेटली एक्सेस करें, यूज करें. सो मगूश, मैनहट्टन प्रेप, ग्रेग मैट, ETS, यूज दीज, ठीक है. दीज आर फ्री. इसके अलावा हमारी एक अपनी सीरीज है GRE पे ऑन YouTube. उसमें एक वीडियो है जिसके नीचे हमने सारे रिसोर्सेज दिए हैं. उसमें रिसोर्सेज में ना बुक्स हैं, ठीक है, मैनहट्टन प्रेप की, जो कि अदरवाइज पैसों की होती है, लेकिन जो फ्री में एक्सेस करना चाहे वो उसको फ्री में एक्सेस कर सकता है. वो लिंक्स अभी भी वैलिड है, राइट? कुछ नहीं है, like I think they got reported, Oh, so beautiful. we had Okay, to what we we're had gonna to like take them down. Yeah. yeah. So and the reason even like we say कि यार जो भी आपको फ्री रिसोर्सेज मिले आप उसको एक्सेस कर लें, is because जब हम प्रिपेयर कर रहे थे GRE के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है. हमारे बड़ी मुश्किल से हमने GRE का किसी तरह से पैसे जमा कर करके हमने GRE के रजिस्टर किया था. अब उसके बाद जाके $500 की मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता. इतने तो पैसे ही नहीं थे मेरे पास, तनख्वाह ही नहीं थी मेरी, ठीक है. So as students back then it really helped us to find free resources. Yeah. So शायद पता नहीं अब सही है गलत है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ यार, जहाँ से भी आपको मुफ्त रिसोर्सेज मिल रहे हैं या जहाँ से आपको सस्ते रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इस्तेमाल करें, ठीक है. क्योंकि GRE itself कुछ भी नहीं है, right? It's just a means to an end. It's just a test that you have to take so you can move towards your actual goal of applying to Fulbright or to other US universities. So yeah, so pick the shortest distance, like shortest route to attaining that goal. With that, और जब ये recording लगेगी ना तो strike आएगी इसके ऊपर कि आप क्या बातें कर रही हैं. Anyways, अच्छा, so that's for free resources. अब यही वाले resources का paid section भी है. ETS के official books अगर आप online लेंगे तो वो महंगी है, I think $40 की है. वैसे आपको किसी ओल्ड बुक बैंक पे मिल जाएगी, and that is where you should go, by the way. ओल्ड बुक बैंक पे जाएं और GRE के सेक्शन में देखें, आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी. सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें, वो कितनी पुरानी है. आपको 2010 का एडिशन में उठा लीजिएगा, लाइक लुक फॉर 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी. हाँ, ओल्ड बुक बैंक पे जाएं, जब इस्तेमाल खत्म हो जाए तो वापस ओल्ड बुक बैंक पे ही उनको आधी प्राइस पे सेल कर दें. You were gonna add something to this? Yeah, इसके अलावा जो है प्रैक्टिस के लिए मैनहट्टन की 5 pound बुक जो है 5 LB's बुक, it's a very like good resource, good repository for practice. और अपडेटेड वाली चीज जो होनी आपके पास होनी चाहिए, तो that will be helpful for you. पर वही सीधे कि वो भी अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास है
या हमारे रिसोर्स लिंक से आपको मिल जाए, अदरवाइज वो खरीदने में तो महंगी होती है, ठीक है। मगूश की भी और मैनहट्टन प्रेप की, नाउ मगूश हैज़ a really really good GRE preparation package, I feel like मुझे बहुत पसंद था, पर वही बात है $149 है तो थोड़ा महंगा है। मुझे ज़्यादातर महंगा लगता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप डेफिनेटली चेकआउट देख लें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2-3 दोस्त इकट्ठे मिलकर एक सब्सक्रिप्शन ले लें और हर कोई जो है वो उसको इस्तेमाल करे। Yeah. हमने बहुत सारे लोगों ने, किसी और ने पे किया था, मैं सिर्फ पार्टिसिपेंट थी, मैंने पे नहीं किया था उसका, लेकिन बैक इन लम्स टाइम हमने में से कुछ लोगों ने ऐसे किया था। Manhattan Prep again is a good resource. It's a verified resource. A lot of people like it. It's slightly more difficult, I feel like, in my personal opinion. It's slightly more difficult than the sort of questions you see on GRE, but then that really prepares you. अगर आप Manhattan Prep questions कर लेते हैं and if you're good at it, तो आपके अच्छा ही score आ जाएगा. But again, it's really expensive. Now, there's another resource that is ScholarDen. Now, ScholarDen की अच्छी बात ये है कि compared to other resources, ठीक है, it's just as comprehensive, and compared to other resources, it's very cost effective. इसका price point बहुत अच्छा है. It's $49 only, which comes about to $12,000 रुपए कुछ इस तरह करके, Something like roughly that. around 11-12,000 रुपए. मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी इसमें, लेकिन इतना ही कुछ है, ठीक है. ScholarDen के उसमें अच्छी बात यह है, can you move to the next slide? Yes. Right, नीचे scroll down. Yeah. Alright, ScholarDen की अच्छी बात यह है कि एक तो it's a comprehensive resource, ठीक है. आप ये ETS की लिस्ट में I think अभी तक included नहीं है, but they're already like they are in touch with ETS, and ETS does approve of how comprehensive and detailed their resources are. It's significantly cheaper than the other resource. You get access to a tutor, and I love that aspect, ठीक है, कि आप $49 दे रहे हैं, 10-12 हज़ार में आपको 3 महीने का एक्सेस मिल जाएगा. और उसमें आपके पास एक्सेस एक ट्यूटर का, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट्स सपोज यू आइडेंटिफाई कि एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे, आपसे वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है. सो you can reach out to the tutor and be like, listen, मुझे समझ नहीं आ रहा, is there a technique, is there a way around it? And that really helps, because the thing with GRE preparation, based off of our experience, is that it can be extremely frustrating. Like आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं and 2 हफ्ते बाद आपको लगता है कि यार I'm not making any headway, I'm not going anywhere, progress नजर नहीं आ रही है, and that can be very demotivating. So being able to speak to a tutor, I think that's a very big plus, and I really, really do like that about ScholarDen. And another thing, like in complement to that, is performance analytics. For example, मैं आज देती हूँ diagnostics, right? मैं आज देती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरा score आ रहा है 149, 152, ठीक है, which is okay, right? But I want to be able to improve this because मुझे अच्छी universities target करनी है. Now, the thing is, जब आप pen paper से कर रहे होते हैं ना, unless you're very very diligent about it, it's kind of hard to see कि यार मैंने किस section में improve किया है, किस section में improve नहीं किया, कौन से questions मैं पहले गलत कर रही थी, अब मैं ठीक कर रही हूँ. Now, to be able to see those sort of performance analytics, I think it's a very very valuable thing to have while preparing as a student, because then you can really like fine tune your preparation, right? कि अगर if I'm getting geometry questions मेरे ठीक हो रहे हैं, ठीक है, then maybe I can like decrease my focus from there and focus on the questions that I'm not getting right. It saves your time and effort. Like especially जब हम practice करते थे, तो हमें पहले figure out करना होता था कि हमने किन सवालों का सही जवाब दिया है, किन का गलत हो गया, and then we had to figure out the explanation as well, कि like where did we go wrong. तो ऐसे resources का फायदा ये होता है कि it identifies for you which questions you got wrong, और फिर उसके पास video explanations भी हैं कि इस question को solve कैसे करते हैं. So it really helps you through like walk through the entire solving process. So we highly recommend. We do recommend this, and the good thing is कि given कि अक्सर लोग जो है ना वो, I mean I'm not saying like we're not saying Magoosh या Manhattan Prep अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, obviously वो इतने time से they've been in the business, they've managed to make a name because they are that good, but हर कोई वो price point afford नहीं कर सकता. So what is the next best alternative that we are able, we get the same sort of resource, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, जो एक structure तरीके से आपको बता सकता है कि आपने कैसे तैयारी शुरू करनी है, especially if you're completely blank, if नहीं समझ आ रहा शुरू कहाँ से करना है. If I was at your place, I would go, I would buy, like I would get this ScholarDen subscription and start with this. पहले diagnostic लें, देखें कि कहाँ पे mistakes हो रही हैं. I do want to show. And then start with just like 2 points, and then probably you can show the website. And then start with their study plan. because उन्होंने detailed study plan दिया हुआ है कि पहले हफ्ते के पहले दिन में ये करें,
पहले हफ्ते के दूसरे दिन पे ये करें, ये वीडियोस देखें, ये प्रैक्टिस करें. तो बेसिकली जो आपका दिमाग, जो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी जानी है ना, इन प्लानिंग ऑल ऑफ दैट आउट, एंड व्हिच इज वेयर लाइक everything is right, how well do you plan it out, वो एफर्ट आपको इतनी नहीं लगानी पड़ेगी. यू कैन स्ट्रेट डाइव इनटू लाइक पुटिंग इन एफर्ट टू गेट योर क्वेश्चंस राइट, टू लर्न एग्जाम टेक्निक्स, एंड दे डू गारंटी 10 plus score improvement. Let's suppose अगर मेरा 150 आया, so they do guarantee 160, and their what's the name of the owner, what's the guy, Faisal, right? Through you can reach out to Faisal directly. Scholar Den का पेज पे अगर आप उन्हें DM करते हैं तो फैसल डायरेक्टली उसमें रिस्पॉन्स भी करते हैं, उनकी टीम भी उनको लाइक, बिकॉज वी हैव सीन कि वो काफी वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर. तो इफ यू वांट लाइक टॉक मोर अबाउट दिस कि यार कैसे मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है, लास्ट टाइम मेरा अच्छा नहीं आया था, या दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट स्कोर कुड आई बी फोकसिंग ऑन, डायग्नोस्टिक वाला को पता चल जाएगा कि अभी कहाँ हालात हैं, कितने पानी में है, राइट, जो आपको पता चल जाएगा. उसके बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ सेट अ गोल, राइट, कि मुझे इतना स्कोर इंप्रूव करना है, एंड इट्स ग्रेट दे आर गारंटीइंग दैट, सो यू कैन लाइक होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर इट, राइट? And yeah, another good thing, and after that I'd like to show the website. Okay, another good thing is it costs only $49, and you can get a 20% discount by using our code BG20. अगर आप BG20 use करते हैं, आपको automatically $10 का डिस्काउंट मिल जाएगा roughly. Then it's going to cost you $39.2, which comes up to around 9,000 रुपया, right? Like 9,000-9,500 रुपये बनते हैं आज के डॉलर प्राइस पे. हफ्ते पहले तक नहीं, 8,500 बन रहे थे. सो आज जब मैंने देखा कि 9,500 बन रहे, तो भाई डॉलर तो क्रेजी हुआ है. बट पॉइंट बीइंग कि इतना तो ना, अगर आप किसी कोई GRE की ट्यूटरिंग भी लेंगे ना, कोई एकेडमी भी जाएंगे, इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको. सो आई वुड रिकमेंड दैट do look into it. It would be very very beneficial for people who are just starting out, right? जिनको अभी नहीं पता जो कि अभी करना क्या है, अभी फैसला किया है कल रजिस्टर करना है और उसके बाद पढ़ना शुरू करना है, तो this could be a good starting point. ठीक है. So with that, let's move on to their website. And so like especially we want to say कि अगर for example आप करना चाह रहे हो GRE, आपने decide कर दिया कि you want to take GRE and apply for Fulbright or other programs in North America, so this is the right time to do that. कल की deadline है for that $50 discount, and the money that you save you can put towards getting a resource like Scholar Den. One thing 15,000 बचेंगे उसमें से. One thing that I want to touch upon is the different plans जो Scholar Den के हैं. They have like 1 month, 3 months and 6 months plan. Depending on your situation, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 महीने का एक्सेस हो, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक्सेस मिल जाए, आपको मटेरियल का एक्सेस मिल जाए, यू कैन डू दैट एज वेल. बट जनरली रिकमेंडेड ये है कि 2 से 3 महीने का जो टाइमलाइन है ना, उसमें आप करें, बिकॉज इफ यू स्टडी फॉर एवरी डे लाइक 1.5 घंटा 2 घंटा, then it will put you in a very good situation to achieve the desired score. Yeah, sorry to cut you off. There are 2 cases. अगर आप GRE जो है वो Fulbright के देना चाह रहे हैं और आपने अगले 2 महीने 3 महीने में देना है, अगर आपने अप्रैल में देना है GRE, then 3 months package would be a good option for you. ठीक है. अगर आपके जहन में है कि मैंने GRE देना है लेकिन मैंने सितंबर में अप्लाई करना है क्योंकि मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज में Fulbright में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बाकी US यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, then probably 6 months वाला, क्योंकि 3 महीने के एक्सेस में भी 6 महीने के एक्सेस में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट स्टार्टेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान लाइक बाद थोड़े टाइम बाद का प्लान है तो मे बी 6 months वाला, अदरवाइज 3 months वाला इट्स बेटर. लाइक 3 महीने से ज्यादा का एक्सेस नहीं चाहिए किसी को भी. Alright, so now I will show you the website. Okay, Thank you. We partnered with Scholar Den for this, और उन्होंने हमें जो है access दिया था so that we can show you the website के क्या क्या उसमें available है. As you can see, like इनके dashboard पे ना, there's a ये जो साहब बता रही थी performance analysis का उस चीज़ का, so these are the different viewpoints जहाँ पे आपको मिल जाएगी समरी कि अच्छा आपने कितने प्रैक्टिस किए, कितने मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्या करना है. So when you go there, like you can start with a diagnostic test, शुरू कर सकते हैं. If you want to like just focus on getting कुछ आपने concepts cover करने हैं, मिसाल के तौर पे quant के आपने concepts cover करने हैं, you can like easily navigate to all the relevant parts of the preparation. So now if you like, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, राइट, जो आपको हाँ या ये अगर इसको भी हम बंद कर दें, राइट, यहाँ से okay. So these are all like the main topics, right? Like आपको arithmetic, algebra, geometry, data analysis, ठीक है, बाकी तो ये exam taking हुआ है. अगर आप इसके अंदर जाएं तो then these are the topics within this big topic जो आपको आने चाहिए.
further उसके अंदर then there are details कि for example अपना these are the things, ये जो topics है ना, this is how you ace GRE, ये वाले topics कि आपको ये पता हो कि अच्छा जब कोई prime numbers का कोई question Exactly. आएगा तो आपको prime numbers क्या होते हैं और but like पूरा उसके बारे में चीज पता होना ज्यादा ये जरूरी है कि आपको पता हो कि अच्छा इसके बारे में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. Obviously you need to know what prime numbers are and how to go about it, but just knowing that will not help you to solve GRE questions. मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आती थी ना, मैं कम टाइम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाती थी. और GRE मेरे ओपिनियन में it's all about that, like knowing the techniques to solve the questions. So इसके अंदर ये बहुत अच्छा सीन है कि इसके अंदर बहुत डिटेल है. You don't have to think about it. आपको कोई पेन पेपर में बहुत लंबा स्टडी प्लान नहीं बनाना. It clearly tells you ये पढ़ना है इस टॉपिक में, इस टॉपिक को पढ़ना है. It further breaks it down in हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. Yeah, and the same for like verbal section, the writing section, and it also helps you like brush up your basic जो grammar की जो चीजें. So this kind of like access and this kind of resource really helps you. कि आप plan भी अगर करना चाहो तो आप easily देख के plan कर सकते हो कि मुझे किस दिन क्या करना है. And the great thing about this is कि आपके पास जो है ना access मिलता है mock test के and questions के. So this is like practice में भी quants के भी बहुत सारे questions हैं, more than 1600 questions that you can practice, and the more you practice the better your score will be. That's like the ये अगर टेक अवे आपने लेना है इस सेशन से तो ये टेक अवे है कि जीआरई की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने यू विल बी बेटर पोजीशन टू गेट अ हाई स्कोर. ओके, एक आखिरी चीज के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे ख्याल से अगर मेरे पास ही होती तो इट वुड हैव सेव्ड मी अ लॉट ऑफ मसले मसाइल. दैट इज दिस योर इंप्रूवमेंट एरियाज. आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपके इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं. अगर कोई आपको ये बता दे तो फिर आपको पता होगा एग्जैक्टली आपने कहाँ एफर्ट लगानी है, राइट. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे आते हैं, मैं उसमें अच्छी हूँ. जैसे ज्योमेट्री में मैं अच्छी होती थी, अब पता नहीं, लेकिन उसमें मैं अच्छी होती थी. मुझे मजा आता था ज्योमेट्री क्वेश्चंस करने में. बट देन देयर आर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो नहीं आते थे मुझे. सो अगर मुझे ये चीज नजर आ रही होती तो आई नो कि मैंने कहाँ फोकस करना है, कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, कितने उसमें से गलत आ रहे हैं. आई थिंक दैट्स रियली यूजफुल. नाउ दैट्स इनफ अबाउट स्कॉलरडेम. लेट्स मूव ऑन to our एक सेकंड. okay. This I just put on a separate slide ताकि इसके बारे में बात कर सके. There's a you can get 20% off. There's a discount code BG20. Is it capital में होना चाहिए सारा? हाँ, it's case sensitive to use it. इसकी screenshot ले लें. Everyone who's right now like watching this on their phone, on their laptop, इसका screenshot ले लें, अपने पास रख लें. And we'll also share the link जहाँ से आप directly जाके उनके जो plans वाली page है वहाँ पे पहुँच सकेंगे. We'll put it in the chat box. But take a screenshot of this and then we'll move forward. Yeah. Also, if you take a screenshot, then also like tag us on Instagram. That would help us. Yes, right? share this in your stories and tag us on Instagram. That will like really help us grow as well. So yeah. All right. So this is. So now we have covered GRE क्या है, GRE के लिए register कैसे करना है, what are the two ways to register for GRE. You can reach out to USCFP or you can directly register through ETS website. Yeah. Then we've also talked about how you can sort of reduce your cost of taking GRE, either take it for free by getting a reimbursement from USCFP or get a discount. $50 before like 31st January. 31st January तक आपने register करना है. Yes. We would highly encourage you to also have a look at those of you who are applying for Fulbright to go check out USCFP की अपनी website. और जब आप वहाँ जाएंगे ना जहाँ लिखा हुआ है कि Fulbright की details हैं, वहाँ पे एक जगह है start your application. ठीक है, जब आप उस पे देता हूँ. हाँ, please show that. Yeah. Like start application. This is where this वो उन्होंने पूरी details दी हुई है कि यार good news कि USCFP is going to reimburse 30 लोगों की वो. So read this, right? Especially if this applicable to you, you would want to know कि अच्छा अगर आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो HEC approved public university में कितना आपको स्कोर चाहिए और क्या कंडीशन है. कंडीशन ये है कि आपने रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं. और एप्लीकेशन आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करनी है. राइट. सो विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो या और उसके बाद अगर आप जाए ना देयर इज एन continue, right? So those of you applying for Fulbright, you should also like continue after this and see ये सारे questions हैं. आप इसको उठाएं और ऊपर जाएं, scroll up. Yeah, these about the Fulbright program. ठीक है.
अक्सर सवाल जो हमें आते हैं ना वो ऑनेस्टली ऑलरेडी फुल राइट ने या यूएससीएफपी ने आंसर किए हुए सारे उसमें। क्या मैं डिपेंडेंट्स को लेके जा सकती हूँ? क्या उनके लिए फंड दिखाने होंगे? क्या मैं जीआरई बाद में सबमिट करा सकती हूँ? लाइक ऑल दीज क्वेश्चन दैट पीपल जनरली आस्क अस, यूएससीएफपी हैज गिवन ऑल द डिटेल्स अबाउट Yeah. इट इन दिस एफएक्यू। ठीक है, अमूमन लोग जब तक एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट नहीं करते ना, वो लोग कभी चाहते ही नहीं है, लाइक स्टार्ट ही नहीं करते और कंटिन्यू पे क्लिक ही नहीं करते। बट इफ यू गो हियर, इट टेल यू कि लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ फॉरेन बैचलर्स डिग्री, कैन आई अप्लाई? या फिर अगर मैं डायरेक्टली मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी करना चाहूँ, कैन आई अप्लाई? यू कांट, बाय द वे, आंसर टू बोथ दोस क्वेश्चंस आर यू कांट। अगर आपने पीएचडी करना है, आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। अगर आपने बाहर की डिग्री है, अगर यूएस की डिग्री है पिछले 5 साल में, तो अप्लाई नहीं कर सकते। So those sort of questions. So do check those out. And we have covered that as well. What else have we covered? And we talked about GRE material as well. Yeah. Now, those of you who still might be struggling to get GRE material, drop us a DM on Instagram. We'll try. हम सबका respond नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिससे कोशिश कर सकें, जिसकी हम मदद कर सकें, we'll try कि हम आपको we can point you in the right direction in terms of GRE resources. और भाई ओल्ड बुक बैंक इज गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज जीआरई की किताबें अदरवाइज बहुत महंगी हैं। ठीक है, मैंने तो जीआरई और सीएसएस दोनों के लिए ओल्ड बुक बैंक से किताबें उठाई थी। सो ट्राई दैट आउट। ठीक है, एंड दैट्स इट। Hope you found this session helpful. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, do subscribe and let us know what you found helpful. See you in the next video.